Human Computer Interaction, which is being offered in Hindi language this semester. So, you all are welcome to the live interaction. And so, I, along with the TA of this course, Adarsh and Ritvik, are here, and we are happy to answer any questions that you have. We'll be happy to know the learning that you are having, any issues that you are facing, or any other question that you have, or also any suggestions that you have which can help us further to improve this course. So let's open the floor and we are open for any question that you have. Anyone, please raise your hand if you have any questions, or at least unmute yourself and ask the question that you have. So if you don't have any question, perfectly fine. You can also share your experience with this course. Anybody want to share your experience with the course, and we can have take the questions in between? Anyone? Yeah, so one question that we have, please clear exam paper pattern. So the exam paper will be similar to the probably assignment that you're having. It will be MCQ, and you already have the specified time within which you need to select the correct answer. So yeah, it will be MCQ, and the syllabus will be all the topics which has been covered in this course. I hope I answered your question. So those who joined late, please feel free to ask any question. Feel free to share your experience with this course, or even if you have any suggestions, feel free to let me know. Okay, so probably let me ask. So given that, okay, so there is another question I can see. So can you give any worksheet or anything which else will be helpful in the papers? So I think the slides that you are having is more than enough, along with the discussion which we are having in the lectures. I don't see any other resources I can provide. So these two resources, slides and the corresponding discussion that we are having in the lecture or the tutorial, uh, is sufficient. As long as you have follow them carefully, you will be perform very well in the examination. Any other question, guys? Okay, so if you don't mind, probably I will ask you all to probably share any experience that you have. Abhishek, okay, so that's good if I ask. Okay, so total kitna question hoga in time? So others, do you remember how much time do we have for in-term examination? So it will And be number. same as we gave in English exam. I think it Mhm. is ये आई थिंक 1.5 घंटे का या 2 घंटे का एग्जाम है. और आर वी अलाउड टू आई मीन बताना कि कितने क्वेश्चन हम देने वाले हैं? किशोर, अगर आपने इंग्लिश का कोर्स देखा हो तो हमने सेम पैटर्न फॉलो किया है.
उसमें 50-60 क्वेश्चन होते हैं और 1.5-2 घंटे का टाइम मिलता है, तो सेम पैटर्न यहाँ फॉलो होगा। अच्छा, ये सही बोला आपने यार, शायद मैं भी, मुझे हिंदी से स्टार्ट करना चाहिए था डिस्कशन। हम्म। मैं भूल गया। चलिए कोई बात नहीं। तो अच्छी बात है। देखिए, 1 से 1.5 घंटे का एग्जाम जो भी होगा, एमसीक्यू सारे क्वेश्चन होंगे, और सारे क्वेश्चंस सफिशिएंट होंगे, जितना भी टाइम होगा सफिशिएंट होगा आंसर करने के लिए। अगर आई डोंट नो कि जो इंग्लिश वाला पेपर था वो पब्लिकली अवेलेबल है कि नहीं है, बट एटलीस्ट सफिशिएंट टाइम होगा जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको आंसर करने के लिए। और और क्वेश्चन इससे पेपर का पहले के हम्म, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम रहेगा। जैसे आपका असाइनमेंट्स थे, लगभग आप ये मानिए कि एक्सटेंडेड असाइनमेंट ही है जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। अगर आप असाइनमेंट अच्छे से कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस को, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके असाइनमेंट सही जा रहे हैं तो एग्जाम भी, आपका मेन एग्जाम भी सही जाएगा। और क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता भी सिमिलर ही होगी। जैसा भी असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है उसी की तरह का होगा। ऐसा नहीं कि उससे बहुत ही कॉम्प्लेक्स या बहुत ही अलग क्वेश्चन होगा। तो जैसा आदर्श ने बताया कि अगर आप असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप आसानी से कर पा रहे हैं, और इनफैक्ट अगर आप लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, उसको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। अभिषेक, प्रॉब्ली हम क्वेश्चन तो लेते रहेंगे। अभिषेक, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं इस कोर्स के साथ, जो भी पढ़ाया गया, क्या आपको समझ में आ रहा है, उसका यूज आपको दिख रहा है, अगर आप बोलना चाहें तो। यहाँ पे एक नीचे बटन है, आई बिलीव रिएक्ट में जाएंगे आप, तो आप अपना हैंड हाथ उठा सकते हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं। तो आप प्लीज या तो अपने आप को अनम्यूट करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लीजिए, या तो आप सर, सर एग्जाम इंग्लिश में होगी या हिंदी लैंग्वेज में? जैसा भी असाइनमेंट हो रहा है वैसा ही होगा। अभी आपको असाइनमेंट में जैसे भी क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं उसी तरीके से पूरा होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बढ़ जाएंगे और सिलेबस बढ़ जाएगा। सिलेबस जितना भी पढ़ाया गया वो उतना पूरा हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? सर विप्लव का एक क्वेश्चन है ऊपर, आई थिंक ऊपर स्क्रॉल अच्छा। स्क्रॉल अप हो गया है वो। अ- हाँ ठीक है। सर, विथ इवॉल्विंग एआई दीज डेज, व्हाट विल बी आवर रोल इन एससीआई इन कमिंग ईयर्स? देखिए, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आज आप किसी भी क्षेत्र को ले, एआई हर तरफ किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है। और अगर आप जितनी भी एआई टेक्नोलॉजी को, तकनीकियों को बनाया जा रहा है, अगर आप उसको देखोगे तो वो किसके लिए बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है जितने ह्यूमन हैं, जितने आपके आसपास के लोग हैं, जितने यूजर हैं, उनके लिए बनाया जा रहा है। और यही सब हमने क्लास में भी अपने डिस्कस किया था कि अगर आप जो उसको उपयोग करता है उनके लिए बना रहे हैं, अगर उनको सेंटर में नहीं रखेंगे तो उस एआई टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। वो अच्छी तरीके से यूज नहीं हो पाएगा, और वो जो उपयोगकर्ताओं की जरूरतें हैं उनके हिसाब से नहीं बन पाएगा। उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो उनकी पसंद है, नापसंद है, उसके हिसाब से नहीं बन पाएगा। इसीलिए एससीआई में जब हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अलग अलग फंडामेंटल्स जो जानते हैं उसके बारे में, उन सब टेक्निक्स को यहाँ पे अप्लाई करके इस तरीके से बनाते हैं कि ये जो एआई टेक्निक हो, उपयोग करने में सरल हो, और जो उपयोग करता है उनकी जरूरतों के हिसाब से हो, उनको मदद कर पाए। तो एक तरह से अगर आप जो फ्यूचर आप देख रहे हो वो एआई आइसोलेशन में नहीं है। एआई और एससीआई एक साथ मिलके ही एक अच्छा सोल्यूशन बनाएंगे, और जो लोग हैं जो उसको यूज कर रहे हैं उससे लाभ ले पाएंगे। तो आई होप कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा विप्लव आपको।
So I'm curious to know, SCI certification recognized by MNC for job offering? Definitely. देखिए, एनपीटीएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक तरह से इनिशिएटिव है, राइट? और इसमें जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो एमएनसी क्या, वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लेके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको एटलीस्ट एज ए सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। मैं डिग्री नहीं है, ये सर्टिफिकेट है। और इसका फायदा आपको मिलेगा। और सर्टिफिकेट से ज्यादा ये तो लर्निंग है ना। जो आप सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे अगर आप उसको अच्छे से समझे नहीं, उसको अच्छे से बता नहीं पाओगे इंटरव्यू में। तो इन शॉर्ट, हाँ मतलब रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगेन, एनपीटीएल कैन कमेंट बेटर, बट मेरी जो सोच और समझ है उसके हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और इससे जो चीजें आप सीख रहे हैं उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, तो और भी अच्छे से आप अच्छी नौकरी और अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। और किसी के कोई प्रश्न? और किसी के कोई प्रश्न अभी तक? शेख जिया ने पूछा प्रश्न और हमने उसके उत्तर दिए। किशोर, सत्यम, विप्लव और अभिषेक। और किसी के कोई प्रश्न है? और जिन लोगों ने प्रश्न पूछा वो दोबारा भी पूछ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। प्रिया, आप अपने इस कोर्स का अनुभव साझा करना चाहेंगे? अगर आप साझा करना चाहें तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ और आप शेयर कर सकते हैं। या आपकी अगर कोई प्रश्न या सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं आप। कोई भी दे सकता है, विप्लव, रुद्र, शेख, अभिषेक, किशोर। हाँ, तो आपका विप्लव का प्रश्न है, जो ग्रेट स्कोरर होंगे क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी जो रिस्पेक्टिव कोर्स इंस्ट्रक्टर हैं उनके साथ इंटर्नशिप करने के लिए? तो अगेन, इसकी देखिए कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल अगर आप कोर्स में बहुत अच्छा करते हैं, टॉप स्कोरर रहते हैं, तो डेफिनेटली अगर अवेलेबिलिटी होगी तो आपको डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो रुद्र प्रताप का क्वेश्चन, आई एम फेसिंग some issues with the product evaluation, especially I'm trying to incorporate NLP and other metadata to support my product, including contextual data, noise evaluation, etc. So to create a proper user evaluation, how do I test? All I have is a hi-fi prototype. तो देखिए, मतलब वही है कि आप अलग अलग मेटा डेटा के साथ, उसके कॉन्टेक्चुअल डेटा और नॉइज के साथ आप उस चीजों को हाई फाई प्रोटोटाइप बना रहे हैं। तो अगेन, इवोल्यूशन के लिए देखिए, एक तो होता है कि पूरा जो कंबाइंड आपका हाई फाई प्रोटोटाइप उसको एक साथ इवेल्युएट करना चाहते हैं। पर मेरा सजेशन होगा कि आप उसका एब्लेशन के तौर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ढेर सारे मेटा डेटा, नॉइज नॉइज कॉन्टेक्चुअल नॉइज और ये सब जो है, तो एब्लेशन के तौर पे आप अलग अलग सेटिंग्स में भी उसको उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। और जैसे आपने लिखा है कि ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट एनएलपी एंड अदर मेटा डेटा, तो ये जब इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो उसके फायदे नुकसान क्या है वो आप साथ में इवेलुएट करिए। सो दैट इज द रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन। अगर आप इसको थोड़ा सा और अपने प्रश्न को और डिटेल में बता पाए, क्या इवेलुएट करना चाहते हैं इसमें? जैसे इनकॉर्पोरेट एनएलपी मेटा डेटा, तो यहाँ पे एनएलपी किस तरीके से, एनएलपी के किस पार्ट को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा मैं बेटर तरीके से बता पाऊंगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको म्यूट कर दूं और आप तब भी बोल Yeah, सकते हैं। yeah. Actually, my Hindi is not that great, so can I Perfectly speak in fine. English? Yeah, Yeah, English is fine. Tell me. yeah. The thing is that I'm trying to work an application like a system to something similar to WhatsApp.
to create communication little more seamless, because most of the Hmm. time we feel like Hmm. the like when we are communicating our like there is some sort of lost in translation, right? Yeah, Like with yeah, our, yeah, so I'm yeah, trying yeah. to develop a solution for that, like Hmm. So you want to have a better translation system? Is that you want to do? yeah, sure, sure, something similar to WhatsApp, but I mean uh, it can be a feature Hmm. incorporating like in our like communicating system like WhatsApp, Instagram or whatever. So I would like to take lot of data, like contextual data, emotional states of a person who are talking from the both of the side. So there are like lot of data coming. Like I need to take lot of metadata. Hmm. So I discussed with few people like how this is going to work, how this is going to like. I only have like a verbal discussion. To test this, actually, I'm having limitation. How do I take this particular metadata? How the AI is reading them? Like, for example, while you are typing some message, you can. I mean, there will be having some sort of facial gestures on you if you are typing something pleasant or talking to somebody you, some loving person also. So these data are captured and they are translated into something else. So this is the entire process. So you need to collect a lot of data from your camera, from your location. Sometimes when we are conversing with someone else in a different context, in a busy area, in a calm area, uh, this thing will I mean So I got a the sense what you are yeah, asking. So you just to confirm, I mean, you want to build some kind of communication system, WhatsApp-like system, which basically can have many metadata, yeah, and you want to evaluate this, right? There are a couple of aspects to this, right? So again, one is basically you can say that it's more like integration. How does the overall integration of the system is done and how it is performing? Because you are when you're building such a system, I mean, you may have some input, you may have corresponding expected output, right? yeah, So if it is deviating from the expected output, it means probably there is some glitch or uh, there is some part which is not working. Again, I mhm, mean, for doing so, I mean, you can do through some program, you can do through AI, so that is different thing. So, so probably if you have written some program or probably are using some existing AI to solve the problem, for example, machine translation or the language translation or anything that you are saying per se, right? Uh, yeah, so they already have some evaluation, predefined evaluation matrices. So these evaluation matrices give you it's kind of indicator of how good the system, how good the component is working. So that is something I would suggest. I mean, you need to have both kind of evaluation, both kind of testing. So one is unit testing more as a how small component of the whole system working independently. So what is the expected input and what is the expected output? So if it is deviating from what you are expecting, then there is an issue. Then that is something you have to fix it. And what you are expecting, that is something often we call it in research is called the ground truth data, right? So ground truth is something. I mean, you already uh, you need to have this is the expected output, this is the actual answer should be, and what your system, be it AI or any algorithm based system, has given it for a given input. And so you can have these different unit testing for all the individual different components, and finally you need to have a combined integrated system testing. So how the overall system should work, what is the expected input, what is the expected output you are getting, and in this way basically you can do a thorough evaluation. okay, sure. All right, I have one more question. Like if we have some ideas where we need to do further research, not from Mhm. by myself. Like Yeah. if I want to reach out in a bigger realm where I can evaluate this idea, whether like for example we have the issue of doom scrolling, which is Mm. happening too much. So I have a solution how to counteract for that. So like if I want to go into deeper research and create much more meaningful impact with the product, so I can't just evaluate with a very smaller
spectrum of people. So if I want to reach out to a bigger spectrum and continue the further research and all, like how do I manage that? So I do agree. I mean, definitely. I mean, if you want to do a deeper research, thorough research, you'll need more people to validate that. Yeah. And of course, at an individual level, you may not have that resources, you may not have that reach to do that, right? In that case, basically, you need to, and that is the beauty. That is the answer is you need to collaborate. You need to basically work with someone, right? So that Yeah. work could be some prospective supervisor. That work could be some as part of your internship. That could be as part of your entrepreneurship or startup journey. It could be anything, right? So that's in short. I mean, if you don't have that resources, don't have that reach, then reach out to someone who has it. And uh, you need to, and for that you need to reach out to the subject matter. You need to reach out to the expert in this area, be it a professor, be it a company, and accordingly you need to work with them. Yeah. Okay. Yeah, and also I want to tell about this particular course, like which is very helpful for me. The only thing I found is that I wish this sort of interactive section should be happened little more earlier, maybe in the beginning or in the mid or in the end stage, so that we will feel like, I mean, I was in the middle of some sort of research and all, so I made not me myself, but everyone maybe help will be getting much more deeper I understanding agree. what they are doing. Yeah, So I agree. I think it is a bit delayed due to some reasons, due to some personal reason, due to some professional reason. yeah, But I agree. I mean, this should have been done earlier. But anyways, and this is where we are, and definitely from next time we'll try to do it bitterly. yeah, cool. And one more thing, like about the hall tickets and all, I don't know, like I mean, will it be released for the exams, like when it will be, the hall tickets and all will be released for the So I exams? think it will be there on the NPTEL website. So I'm sure. I mean, you'll get all those information there. Oh, okay, And cool. yeah, so that communication will be done through NPTEL. Okay, sure, sure. Okay, yeah, that's it. Okay, great. So we have one message from Preeti Kumari. It was an excellent learning experience that improved my uh, design perspective and depended my knowledge on SCI SCI principle. So thank you so much, Preeti. And I believe Preeti has left as well. But anyways, thank you so much. Anybody else? If you have any question or any suggestions or any doubt. Okay, so if it is not, then probably we can call it off, right? And let me thank my wonderful TAs who helped me significantly in this course, Adarsh and Ritvik. So really appreciate your help in the course. So uh, yeah, Kishore. So not Kishore. Uh, so probably NPTEL administrator, please let me know. I mean, should we end the call or should we continue? Because it seems there is no further question. Yes, sir. If there is no question, means we can wind up, sir. We can close the session. So let me ask for the last time. So anybody has any further follow-up question? Okay, if not, then thank you so much, and thank you so much everyone for joining. And I'm sure you'll have a good learning as part from this course. Thank you so much. Thank you all. Thank you, sir. Thank you everyone for joining. It was a great.